Hi, so in this video we are going to look into a few of the very basic concepts which I always keep on saying and tweeting about, and then people might not have an idea of why I have been saying this. So here what we are doing is we are just comparing the different indexes, major indexes which we have in our NSE BSE लिस्टेड कंपनीज, और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से बिहेव करती है। तो आप देखे होंगे कि ये 2020 में जब कोरोना आई तब मैंने भी ट्वीट किया था कि आईटी इज़ द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट राइट इन। और उसके पहले भी मैं हमेशा बोला हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में आईटी हमेशा ही एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे निफ्टी बैंक ग्रीन कलर में है, एंड दिस इज़ हाउ निफ्टी बैंक। सो वी आर डूइंग अ कंपैरिजन, और यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो है ये निफ्टी है, ये पिंक लाइन जो है ये निफ्टी 500 इंडेक्स है, और ग्रीन तो हो गई इस बैंक की इंडेक्स, और ये रेड जो है वाइट इंडेक्स है, और ये जो ब्लैक कलर की है दिस इज़ निफ्टी मिड कैप 100। ठीक है। सो हम लोग अभी यही देख सकते हैं कि जब से रिसेशन आई है, सिंस 2008 वी हैड अ रिसेशन, एंड आफ्टर दैट यू कैन वेरी वेल सी दैट निफ्टी आईटी वाज ऑलवेज वे अबव दिस निफ्टी, right? So this is exactly the reason. So forget the data from 2020 February onwards, रिसेशन ये कोरोना के पहले तक ये डेटा इमेटीरियल है। इसमें जो ये मूव, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई क्लेम ऑफ, बट अगर आपको इस तरह से एक इंडेक्स मिलती है कि जब भी कोई एक मेजर इवेंट हुई थी, ऑफ कोर्स कोरोना के पहले मेजर इवेंट थी 2008 की जो रिसेशन आई थी। सो यहाँ पे हम डेटा देख रहे हैं सिंस द फर्स्ट ऑफ 2009, और यहाँ से आप देख सकते हो कि सिंस दैट टाइम दिस निफ्टी आईटी वाज ऑलवेज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स। And here you can see over a period of time, Nifty index is the one of the worst performers, or even the Nifty mid cap जो index है 100 mid cap 100 या Nifty bank, these are much better performing indexes compared to Nifty. In fact, Nifty 500 is also a better index compared to Nifty. So कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप देखते हो पीपल कीप ऑन शाउटिंग दैट ओके बाय निफ्टी बीज एंड डू इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी इंडेक्स एंड इंडेक्स ETFs and all this stuff. So you have to understand from a very long perspective, Nifty has never been a good sort of performing index, in my opinion, definitely. Or going forward, this was something, this is exactly the reason why in this time frame of March, April, when I tweeted that Nifty IT is one of the indexes, क्योंकि अगर आप डेटा यहाँ से देखते हो, then even though the index was down, this Nifty IT was still able to hold the levels of 2015-16 comparison, ये जो percentage है. So this was exactly the reason, and then this move was something which no one had anticipated. Things lined up for IT, and then we got a good IT return, right? Good return in IT, and this is something which is this small cap 250 index, और ये 2019 से स्टार्ट हुई है, और स्मॉल कैप्स में मैं जनरली इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, अगर करूँगा भी तो वाया म्यूचुअल फंड्स। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अब क्या, right? So this is another aspect which we are going to consider in the second part of this video. So let's do a analysis of how things are looking and shaping up after post COVID. So हम अगर यहाँ से डेटा कंसिडर करते हैं, that's from 2020 के मार्च से, so right now you can see that though this Nifty IT has been a performer, लेकिन यहाँ से अगर आप डेटा कंसिडर करते हो, so you can see the top index right now is this Nifty small cap 250, and then you have this Nifty mid cap. So आप ये कह सकते हो कि post corona, and of course the third one is Nifty IT over here, the fourth one is Nifty bank, and as you always the last one is Nifty. So अगर आपको इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्च में अगर आप अपना पैसा लगाए थे in any of these 5 indexes, the worst performing index till now is Nifty 50, right? So here you can see even the Nifty 500 has outperformed Nifty over this period of time. So this is exactly the sort of analysis where it shows that one of the lowest guarantees जो होती है, जो lowest returns होती है in major of this 5 indexes which I am studying right now, in every time frame, whether we are looking for post 2008 recession till now, or we are looking for post
2020 कोरोना क्रैश टिल नाउ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि निफ्टी इज एब्सोल्युटली नॉट अ बिग सॉर्ट ऑफ अ डील फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि निफ्टी बैंक इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग द निफ्टी। अगर मैं ये तीनों को हटा दूँ, द निफ्टी IT विच इज डिस्टॉर्टिंग द डेटा एंड say mid cap and this one. So here you can see the returns from these three. That is, the green one is the Nifty Bank, and then you have Nifty 500, and then you have Nifty in the blue, Nifty 500 in the pink. So here you can see that even Nifty 500, it has been a much better performing sort of an asset, and this is exactly sort of analysis which you should do on your own when you're trying to find a mutual fund. Means of course a mutual fund में different categories होते हैं, different targets होते हैं, targets in the sense कोई mid cap में ज़्यादा focused होता है, कोई लार्ज कैप में होता है, कोई निफ्टी 50 में होता है. सो इन जनरल आई थिंक blindly buying Nifty ETF, which people do say a lot about, and so this is not such a good idea for in my opinion, but rather you should be looking more into some specific sort of sectorial IT, just like IT हो या बैंक हो, इसमें अगर आप देखते हो तो उसमें आपको शायद ज़्यादा फ़ायदा मिले. तो नाउ let's do a quick recap of what we learned. So अगर आप इस टाइम पे ये आप अगर देखते हो निफ्टी मिड कैप 100, so this is exactly one of the sectors जो बहुत अच्छी leaps and bounds में बढ़ी है. And over this period of time, even though Nifty was shifting, here you can see the mid cap index is looking really good, especially the Nifty mid cap 100. मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपने फेवरेट मिड कैप 100 के स्टॉक्स को डिस्कस कर सकता हूँ, और उसमें हम देखेंगे कि मिड कैप 100 में जो भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से टॉप 3, 4, 5 कंपनीज फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, एंड मे बी वी कैन फाइंड दोज कंपनीज एंड वी कैन देन फाइंड सम सिप लेवल्स एंड सिप वहाँ पे अगर हम करें. सो इन जनरल दिस इज अ मच बेटर स्ट्रेटजी देन टू गो ब्लाइंडली एंड बाय म्यूचुअल फंड्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर पीपल हु आर इन द मार्केट. डेफिनेटली अगर आप ऑफिस गए हो और इफ़ यू हैव वेरी लो आइडिया ऑफ हाउ द मार्केट वर्क्स, देन डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इज़ अ बेटर वे. बट आई थिंक हमारे लिए जिसको मार्केट की आइडिया होती है और जिसको जो ट्रेडिंग एक्टिवली करते हैं या एटलीस्ट मार्केट को एक्टिवली मॉनिटर करते हैं, सो डेफिनेटली दिस स्ट्रैटेजी इज़ मच अ विनिंग स्ट्रैटेजी कंपेयर टू जस्ट गिविंग आउट द मनी. स्पेशली अगर आप इंडेक्स वाइज देखते हो, सो आई थिंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द इंडेक्सेस विच इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग. इन द सेंस निफ्टी डेफिनेटली 10 गुना 20 गुना बढ़ सकती है ओवर द नेक्स्ट 10, 20, 15 ईयर्स, बट अगर वो 10-15 गुना बढ़ा, सो बेसिकली दीज सेक्टर्स दे विल ऑलवेज आउट परफॉर्म. एंड ऑल्सो इफ यू लुक इन टू निफ्टी IT, of course, so you can see that even though there's a lot of hype in Nifty IT, but you can see that even this mid cap was always able to give it a tight competition. And way back from 20 June of the last year, you can see that though the Nifty IT has been underperforming compared to this mid cap 100, but Nifty mid cap 100 is a much powerful and stronger one. And at last, if we bring up this one, that's this small cap, and now let's remove this Nifty 500 IT and NSE bank. Okay, you can also see that bank has always in this post corona times, bank is sort of following the Nifty. कभी ऊपर जाती है, कभी ये नीचे आती है, लेकिन वो इसका जो रिटर्न है ये बेसिकली निफ्टी के ही कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करती है. बट हियर यू कैन सी दिस टू बिग विनर्स. वन इज द स्मॉल कैप 250 ओवर हियर एंड अनदर इज द मिड कैप 100. सो फ्रॉम अ investment perspective, and on the top of that, the good thing is here you can see this rise came in, and now it's very well in a range, consolidating over a longer period of time. Both of these indexes, just like Nifty भी जिस तरह से यहाँ पे consolidate कर रही है since October of last year, you can see that Nifty में fall आ रही है, उसके correspondingly definitely ये indexes भी करेंगे. But I think going forward, अगर आपको investment purpose में अभी अगर सोचना है कि कहाँ पे जाएं, so basically I think this is a much better place to be in a Nifty mid cap 100 and Nifty small cap 250. Thanks a lot for listening. This video is going to give you an idea, because at the end of the day, whenever you are entering into any of this concept of SIP and stuff like that,
I have always seen that there is a lot of tweets and ongoing discussions about nifty bees, and I have never understood it, and this is exactly the reason. Maybe I am wrong in understanding. अगर आपको लगे कि ये मेरा लॉजिक गलत है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट अ कमेंट एंड वी कैन ऑलवेज हैव अ हेल्दी डिस्कशन जहाँ पे आप भी मुझसे कुछ सीखो और मैं भी आपसे कुछ सीखूँ. थैंक्स.